Assalamu alaikum. Today we will be talking about the temporal and the infratemporal region. We will be discussing this topic under 6-7 headings. So today just a brief description about the temporal and the intratemporal regions. These temporal and the infratemporal regions, they include in this region, what do you have? You have the muscles of the mastication. What are where from these muscles of mastication come? They come from the mesoderm of the first brachial arch. By now you must have read about the brachial arches. So your muscles of mastication, which forms an important content of the temporal region, they come from the mesoderm of the first brachial arch. So in the temporal and region and the infratemporal region, the contents are, you have the muscles of the mastication, then you have one joint, that is the temporomandibular joint. You will come across the ganglion called the otic ganglion, which is a parasympathetic ganglion, and this ganglion has four roots. It has the sensory, sympathetic, motor and secretomotor. Moreover, the main blood supply in this area comes via the maxillary artery. It has a branch called as the middle meningeal artery, which forms the main source of the blood supply. Coming to the temporal fossa, you can see this is the lateral side of the skull. We are seeing the side of the skull. So what will you come across in this? You will be having the fossa here. यहाँ पे आपका fossa होगा. You will be having a fossa or slight depression in the skull here. You will be having the fossa or slight depression in the skull here. This fossa is called as the temporal fossa. This fossa is called as the temporal fossa. The temporal fossa, it, as you can see in the picture, it lies on the side of the skull. Fine. It is bounded above by the superior temporal line and below by the zygomatic arch. यहाँ पे आपका एक होता है, I think a bone is here present, which is also called as the cheekbone or the zygomatic bone. It has an arch over here, so this is the zygomatic arch. Your temporal fossa has the superior temporal line superiorly, and inferiorly it has the zygomatic arch. If we go to the boundaries, anteriorly what will you come across? You have this is your frontal bone. Fine. So anteriorly you will be having the power of the frontal bone, and inferiorly but anterior you will be having the zygomatic bone. So what will be the anterior relations of the temporal fossa? You will be having the frontal bone and the zygomatic bone. Frontal bone and the zygomatic bone. Then posteriorly you will be having you have this as your superior temporal line, but beneath your superior temporal line you have another line, that is the inferior temporal line, which goes posteriorly. So your inferior temporal line forms the posterior boundary. Can you see this process here? This process, a beak shaped process here, it is called as this pink process. This is called as the mastoid process, है ना, तोंद जैसी. This mastoid process, on this mastoid just above it you have a supramastoid crest जैसा यहाँ पे होगा. So it will again form the posterior boundary of your temporal fossa. Anteriorly again you have the frontal bone and the zygomatic bone. You have the frontal bone and the zygomatic bone. Posteriorly you have the inferior temporal line. Then here the supramastoid crest above the mastoid process. Supramastoid crest above the mastoid process. What you will come across superiorly? You will be having the superior temporal line as well as the relation superiorly, and inferiorly यहाँ पे you will be having the zygomatic arch. You will be having the zygomatic arch. So this was these are the boundaries of the temporal fossa. Superiorly you have the superior temporal line, posteriorly you have the inferior temporal line and the supramastoid crest, inferiorly you will see the zygomatic arch, and anterior the frontal bone and the zygomatic bones. Then the floor.
अब ये है ना, ये इसका फ्लोर है. इस फ्लोर में क्या होता है, इस स्कल ही है, पर स्कल का कौन सा पार्ट है? यू विल बी हैविंग द पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल बोन, यू विल बी हैविंग द पार्ट्स ऑफ द पेराइटल बोन, देन यू विल बी हैविंग द पार्ट्स ऑफ द, यहाँ से टेम्पोरल बोन, और अंदर से एक बोन यहाँ पे होती है स्फीनॉइड बोन. सो यू विल बी हैविंग द फ्रंटल, parietal, temporal and the sphenoid bone. These four bones here join to form a H-shaped suture that is called as the pterion. The H-shaped suture that is called as the pterion. So these were the boundaries of your temporal fossa. अब हमने boundaries कर दी, इसके अंदर भी कुछ होगा. There will be structures within. What are the contents of the temporal fossa? First of all, you will come across this fan shaped muscle. ये बड़ी fan shaped muscle यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं temporalis muscle. This muscle is called as the temporalis muscle. Then you have the middle temporal artery. यहाँ पे एक artery निकलती है, middle temporal artery, which is the branch of the superficial temporal artery. Middle temporal artery, which is a branch of the superficial temporal artery. Once again, I will be talking about the structures. You will be having this big fan shaped muscle that is called as the temporalis muscle, and superficial temporal artery giving a branch called as the middle temporal artery. The contents are quite clear in this picture. See, you will be having this fan shaped muscle called as the temporalis muscle, which is one of the muscles of the mastication. Then you will be having the middle temporal artery. Fine. You will be having these are the deep temporal nerves. Fine. These are then you will be having what else? You will be having the zygomaticotemporal. Is it here somewhere? Zygomatico यहाँ पे होती है. Zygomaticotemporal nerve. Fine. And artery. You will be having the deep temporal artery also. This is the deep temporal artery, deep temporal nerves, zygomatical temporal zygomaticotemporal nerve, and you will be having the temporalis muscle, and you came across the middle temporal artery. Again enumerating the structures, you will be having the temporalis muscle, यहाँ से होगी middle temporal artery, which is the branch of the superficial temporal artery, then zygomaticotemporal nerve, then you will be having the deep temporal nerves, deep temporal vessels, and that's it. They are the contents. After that comes your infratemporal fossa. एक हो गया temporal fossa, that is present on the side of the skull. Now it is infra. Infra means beneath. If you have the temporal bone here, so beneath here you will be having your infratemporal fossa. Beneath here you will be having your infratemporal fossa. यहाँ पे you have a bone that is called as the zygomatic arch. ये है zygomatic arch. This is your zygomatic arch. यहाँ पे होता है infratemporal fossa, just below the zygomatic arch. So how is it formed? Again we have to locate the boundaries of the infratemporal fossa. This bone is called as the maxilla, this blue colored bone. So the posterior surface, पीछे से जो maxilla का surface होता है ना, posterior surface of the maxilla, body of the maxilla forms the anterior boundary. This is the body of the maxilla. Posterior surface of the body of the maxilla forms the anterior boundary. Roof here is formed by you have a bone here called as the sphenoid. मैंने बोला ना आपको sphenoid एक हड्डी यहाँ पे होती है. So roof is formed by the temporal area, infratemporal area of the greater wing of the sphenoid. Your sphenoid bone has two wings. It has greater wing and it has the lesser wing. So your roof will be formed by the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid. Infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid. So you have infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid as the roof, and anteriorly you will having the posterior surface of the body of the maxilla. Then medially हमें क्या दिख रहा है? ये lateral pterygoid plate. ये this is your lateral pterygoid plate. इसके ऊपर क्या होगा? You will be having the ramus of the mandible. You will be यहाँ पे mandible हटा के दिखा रहे हैं ये fossa. अब जब ऊपर से हम mandible रखेंगे, that will act as the lateral wall. So space, the fossa between your lateral pterygoid plate
and the mandible above, that is mandible will be laterally, anteriorly the maxilla, and superiorly it will be having the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid. So this is your infratemporal fossa. This is your infratemporal fossa. Again, anteriorly the body of maxilla, superiorly the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid, medially the lateral pterygoid plate, then you have a space here, and over it laterally you will be having the ramus of the mandible. Then the contents, what contents you will come across in your infratemporal fossa. ये है जी आपका infratemporal fossa, ठीक है. ये है zygomatic arch. Zygomatic arch के नीचे होता है infratemporal fossa. So you will be having the two muscles. This is your lateral pterygoid muscle and this is your medial pterygoid muscle. Lateral pterygoid muscle and the medial pterygoid muscle. These are the two muscles which you will be seeing as the content of the infratemporal fossa. Then you have the mandibular nerve here. This is your mandibular nerve, fine, with its branches. Then you have the this is the maxillary nerve with its branches. Then you have the mandibular, you can have maxillary nerve here, mandibular nerve and the maxillary nerve both, maxillary nerve as well as the mandibular nerve. Then you have the, यहाँ से एक branch जाता है यहाँ से, since this is your lingual nerve, यहाँ पे एक branch होता है cauda tympana nerve, which is the branch of the facial nerve. Then comes your maxillary artery. Where is it? This is your maxillary artery, ठीक है. This is your maxillary nerve and the maxillary artery. What else? You will be having the posterior superior alveolar vessels from the maxillary artery. This is the branch of the maxillary artery itself and the accompanying veins. So what are the contents of your infratemporal fossa? You will be having the lateral pterygoid muscle, this triangular muscle. Then you will be having the beneath the medial pterygoid muscle, so two muscles. Then you will be having the mandibular nerve here, fine. Then you have this maxillary nerve, ठीक है, maxillary artery and a branch, that is the posterior superior alveolar branch of the maxillary artery. Moreover, यहाँ से आपका आएगा, here you will be having your cauda tympana nerve. Then for the various landmarks of the lateral side of the skull, what things you will come across, you should be aware about those things. This is the zygomatic bone, can you see? This forms the prominence of your cheek. This zygomatic bone, it forms the prominence of your cheek. The zygomatic bone forms the prominence of your cheek. Then you have this zygomatic arch. You have the zygomatic bone and the zygomatic arch. After that comes your this head of the mandible. This is the head of the mandible, fine. Then you have this as your mastoid process. This process posteriorly is your mastoid process. You have this as your superior temporal line. Then you have the inferior temporal line. This area here is called as the pterion. Where you have this H-shaped suture. This is called as the pterion, where parietal, frontal, temporal and the sphenoid bone meet. Parietal, frontal, temporal and the sphenoid, parietal, frontal, temporal and the sphenoid bone meet. This point here, it is called as the pterion. ये H-shaped यहाँ suture बनता है, उसको हम बोलते हैं pterion. This is the weakest part of the skull. Fine. Then we will move on to the various muscles of the mastication, but before that we will be discussing the temporal fascia. The various muscles of mastication you have the medial pterygoid, you have the lateral pterygoid, you have the masseter and you have the temporalis. You have the medial pterygoid, lateral pterygoid, masseter and the temporalis. As you all know, they are derived from the first brachial arch and are being supplied by the mandibular nerve, ठीक है. उसके बाद temporal fascia होता है. ये temporal fascia, what is this? It is an eponeurotic sheet. ये जो काट रहे हैं यहाँ पे है ना, ये fascia काटा है. This is an eponeurotic sheet
ठीक है, present in the temporal fossa. This is your temporal fossa. It has a sheet called as the temporal fascia. When we remove this fascia, beneath it you come across a fan shaped muscle, जिसके बारे में आपसे पहले भी बात की. That is your temporalis. That is your temporalis. Superiorly, अगर हम ऊपर से देखेंगे, ये जो इसका है ना temporal fascia, ये जो इसका temporal fascia है, superiorly इसको एक ही लेयर होती है जो यहाँ पे superior temporal line को होती है attach. Your temporal fascia, it is an aponeurotic sheet. ठीक है, सुपीरियरली यहाँ पे एक ही लेयर होती है इसको, वो होती है अटैच टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, पर एज इट गोज डाउन इट स्प्लिट्स इनटू टू. फाइन, ये है ना जाइगोमेटिक आर्च. यहाँ पे आपका जाइगोमेटिक आर्च के बाहर से और अंदर से दो लेयर्स फिक्स हो जाती, फ्यूज हो जाती है. दे आर अटैच टू द outer lip and the inner lip of the zygomatic arch. अब जब ये एक लेयर ऊपर होता है, नीचे जाके स्प्लिट होता है, so there will be some space in between these two layers. उस स्पेस में आपकी superficial temporal artery यहाँ पे होती है. Fine, and you have the zygomaticotemporal nerve as the content. Fine. Then जो आपका ये temporal fascia है ना, इसको यहाँ से एक और चीज़ से आता है, दैट इज़ एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस. बाय नाउ यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज़ दैट. वो भी इसके साथ ब्लेंड हो जाता है. ठीक है, वो भी इसका एक्सपेंशन एक पकड़ता है. मतलब जो एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस है ना, वो अपना एक्सपेंशन देता है किसको, टेम्पोरल फेशिया को. ठीक है, सो यहाँ पे यू विल बी हैविंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस ऑरिकुलरिस एंटीरियर सुपीरियर मसल्स. फाइन. देन जो आपका ये टेम्पोरल फेशिया है, इसका डीप सरफेस, अंदर से जो सरफेस है उस पे से कुछ इस मसल के फाइबर्स भी ओरिजिन लेंगे जो इसके नीचे है, टेम्पोरल मसल्स. So if we just summarize your temporal fascia, this is an aponeurotic sheath which is present over the temporal fossa. Fine, and it covers your temporalis muscle. Then superiorly it has one layer which is attached to the superior temporal line. Getting downward, it splits into two layers which are attached to the outer and inner lip of the zygomatic arch. And the contents within क्या क्या होगा, you will be having the superficial temporal artery and the zygomaticotemporal, superficial temporal artery and the zygomaticotemporal nerve. Then your this temporal fascia, it receives the expansion from the epicranial एपिन्यूरोसिस होता है ऊपर से, उसका एक्सपेंशन इसमें जाता है. ठीक है, अब अगर ये हम टेम्पोरल फेशियल लिफ्ट करेंगे तो इनर साइड विल बी हैविंग द ओरिजिन ऑफ सम फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरालिस मसल. सो इट गिव्स ओरिजिन टू द टेम्पोरालिस मसल इवन. फाइन. Now here, as you can see, you will be seeing the muscles of the mastication here. This fan shaped muscle, this is the temporalis muscle. This is your medial pterygoid, sorry, this is your masseter, this is your masseter. ठीक है, यहाँ पे दो अच्छी से दिखा के, I will discuss these two here with you. What is this masseter muscle? Can you see? This is the muscle of mastication. What is the shape? It is quadrilateral. It is quadrilateral muscle. It is present on the ramus. यहाँ पे ramus है ना, बाजू है mandible की, ramus of the mandible. This is present on the ramus of the mandible. अब इसका origin कैसे होता है? It has superficial layer and it has deep layer. It has superficial layer and it has deep layer. ठीक है, जो ये होता है ना सुपरफिशियल लेयर, ये आप देख रहे हो, दिस इज जाइगोमैटिक आर्च, दिस इज योर जाइगोमैटिक आर्च. लोअर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर 2/3, पूरा नहीं, पीछे वाला एरिया नहीं, लोअर बॉर्डर of the anterior 2/3 of the zygomatic arch. Lower border of the anterior 2/3 of the zygomatic arch. ये आपका zygomatic arch है, इसके anterior 2/3 का लोअर बॉर्डर से सुपरफिशियल फाइबर्स का ओरिजिन होता है. Anterior lower border of the anterior 2/3 of the zygomatic arch gives the origin to this masseter superficial layers. Then deep comes from the, अगर हम zygomatic arch का deep surface देखेंगे, deep fibers वहाँ से आते हैं. So we'll be having the superficial fibers and you will be having the deep layers. Then there is the insertion, यहाँ पे arise ये हो जाएंगे. It will insert on the lateral surface of the ramus of the mandible, है ना, ये ramus mandible का, इसके lateral surface पे कर रहे हैं ना insert. ठीक है, superficial fibers
लोअर पार्ट पे करते हैं सुपरफिशियल फाइबर्स। जो डीप लेयर है ना वो पूरे को कवर करता है, जो डीप लेयर है वो पूरे को, और मिडिल लेयर सेंट्रल पे करता है। जो सुपरफिशियल लेयर होता है ना मैसेटर का, दैट inserts on the lower part, then the deep fibers on the rest, and some middle fibers in the between, some middle fibers in the central of the ramus. Fine. This is the origin and the insertion of the masseter. What is it supplied by? It is supplied by the masseteric branch of the mandibular nerve. Mandibular nerve का masseteric branch होता है, वो उसको blood supply देता है. What will be its action? It will elevate mandible. Fine. ठीक है, एंड इट विल कॉज द प्रोट्रूजन, मुंह बाहर की तरफ करना. इट विल एलिवेट मैंडिबल, ऊपर लेगा मैंडिबल को, और प्रोट्रूजन ऑफ द माउथ. फाइन. सो दिस इज योर मैसेटर. सी टेम्पोरालिस मसल इज क्वाइट एविडेंट हेयर. अब हम करेंगे टेम्पोरालिस डिस्कस. This temporalis, as you can see, this is a fan-shaped muscle in the temporal fossa. This is a fan-shaped muscle in the temporal fossa. So, where does it arise from? We have discussed previously that your temporalis fascia gives origin to some of the fibers of the temporalis. So, one origin, source of origin will be from the temporal fascia. अदर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये फोसा है ना, फोसा जो डिप्रेशन हमने बात की, उस फोसे से हो जाता है कुछ अराइज. सो यू हैव टू सोर्सेज ऑफ ओरिजिन फॉर द टेम्पोरालिस मसल, वन फ्रॉम द फोसा, टेम्पोरल फोसा इटसेल्फ, एंड फ्रॉम द टेम्पोरल फेशिया, एंड फ्रॉम द टेम्पोरल फेशिया. देन वेयर डू दे इंसर्ट? ये है ना, ये आपकी मैंडिबल. मैंडिबल को ऊपर से पीछे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्डलॉइड प्रोसेस, और आगे वाला बीक शेप्ड इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस. ये आगे वाले प्रोसेस में इसका ये हो जाता है टर्मिनेशन. इट विल एंड अप इन द कोरोनॉइड प्रोसेस. इट विल एंड अप इन द कोरोनॉइड प्रोसेस. एंटीरियर ये करेगा मार्जिन्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस को पे एंड. फाइन. एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ramus of the mandible, यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ramus of the mandible पे, एंड द coronoid process. So temporalis muscle has the origin from the temporal fossa and from temporalis fascia. It will get inserted on the coronoid process and the anterior border of the ramus of the mandible. It will be again supplied by the division of the mandibular nerve, that is the deep temporal division branches. पहला हो गया मैसेट्रिक मसल, तो मैसेट्रिक नर्व फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व. देन टेम्पोरालिस मसल सप्लाइड बाय टू डीप टेम्पोरल नर्व्स फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व अगेन. व्हाट विल इट डू? सेम, ये करेगा फिर से एलिवेट मैंडिबल को एंड प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल, एलिवेशन एंड द प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल. Then comes your lateral pterygoid. Can you see this muscle? This is your lateral pterygoid. It has two heads. It has upper head and the lower head. Upper head and the lower head. This is the upper head of the lateral pterygoid and this is the lower head of the lateral pterygoid. Lateral pterygoid muscle, it is a conical muscle, fine, having upper and the lower head. Upper and the lower head. जो अभी upper head है, ठीक है, कहाँ से लग रहा है इसका ओरिजिन हो रहा है? स्फीनॉइड से. ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था स्फीनॉइड एक बोन होती है, उसका इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट, इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. जो ये अपर हेड है ना, इट अराइजेज फ्रॉम द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. एंड द लोअर हेड, लोअर हेड कहाँ से आता है? यहाँ पे होता है लेटरल टेरिगोइड प्लेट, एक तोंत जैसी, उसके लेटरल सरफेस पे. लेटरल, दिस इज योर लेटरल टेरिगोइड प्लेट. लेटरल टेरिगोइड प्लेट के लेटरल सरफेस से आता है लोअर हेड. अपर हेड कम्स फ्रॉम द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. यहाँ पे होता है एक लेटरल टेरिगोइड प्लेट, उसकी लेटरल सरफेस से आता है लोअर हेड ऑफ द टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड. So these two heads they converge and finally यहाँ पे जो होता है ना मैंडिबल का this कॉन्डाइलर, दिस मैंडिबल का जो कॉन्डाइल होता है, इसके आगे यहाँ पे एक फोसा होता है, नेक के सामने यहाँ पे एक फोसा होता है, उसको हम बोलते हैं टेरिगोइड फोविया. उसको हम बोलते हैं टेरिगोइड फोविया. उस टेरिगोइड फोविया में इंसर्ट करता है. इट इंसर्ट्स into the pterygoid fovea. अब यहाँ पे जो जॉइंट होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, उसके बीच में एक डिस्क होती है, आर्टिकुलर डिस्क,
उसके एंटीरियर मार्जिन पे भी ये इंसर्ट हो जाता है, उसके एंटीरियर मार्जिन पे भी ये इंसर्ट होता है. सो योर, अगेन आई विल रिपीट, योर लेटरल टेरिगॉइड हैज़ अपर हेड एंड द लोअर हेड. Upper head arises from the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid, and the lower head arises from the, this is your pterygoid, lateral pterygoid plate. ये है lateral pterygoid plate की lateral surface होती है और medial surface होती है. lateral surface से उठता है lower head of the lateral pterygoid muscle. They will converge and will insert on the pterygoid fovea. pterygoid fovea एक छोटा सा फोसा होता है mandible के condyle के आगे. Fine. So it will be supplied by the anterior division of the mandibular nerve. It will be supplied by the nerve to the lateral pterygoid, which is from the anterior division of the mandibular nerve. ये क्या करेगा, पहले तो एलिवेट करते थे, डिप्रेस करेगा मैंडिबल को. इट विल डिप्रेस मैंडिबल, but it will again protrude mandible. ठीक है, it will depress mandible and help in the protrusion. This is the only muscle of mastication which will depress mandible. Then you have another muscle, that is the medial pterygoid. You have this medial pterygoid. Medial pterygoid ka this muscle is your medial pterygoid. This is the superficial head and the deep head. यहाँ पे है upper and lower head, यहाँ पे है superficial जो ऊपर होगा and the deep head. Superficial head and the deep head. If we talk about this muscle, this is quadrilateral. This is quadrilateral muscle. सुपरफिशियल जो होता है ना, आप यहाँ पे क्या होता है, पीछे से यहाँ पे ये हड्डी होती है, इसको मैग्जिला बोलते हैं. मैग्जिला के पीछे एक ट्यूबरोस्टी होती है, एलिवेशन सी होती है, इसको एक जगह ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबरोस्टी. वहाँ से आता है इसका सुपरफिशियल हेड, वहाँ से आता है इसका सुपरफिशियल हेड. डीप हेड आता है, यहाँ पे हमने बोला था ना लेटरल टेरिगॉइड प्लेट. लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के लेटरल सरफेस से आता है लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड, और मीडियल सरफेस से क्या आएगा, डीप हेड ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड. सो दिस डीप हेड कम्स फ्रॉम द medial surface of the lateral pterygoid. This deep head comes from the medial surface of this lateral pterygoid, and lower head of the lateral pterygoid comes from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. यहाँ पे एक बोन है, उसको हम बोलते हैं लेटरल टेरिगॉइड प्लेट. ऐसे आपको समझ आएगा. लेटरल, उसके लेटरल सरफेस से आएगा लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड, और मीडियल सरफेस से आएगा डीप हेड ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. फाइन. देन व्हाट हैपन्स, इट जो आपके यहाँ पे है ये, दिस इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल. एंगल ऑफ द मैंडिबल के अंदर से होता है थोड़ा रफ एरिया, वहाँ पे ये हो जाता है, this insert हो जाता है. ठीक है, it inserts there. It is being supplied by the nerve to the medial pterygoid, which comes from the main trunk of the mandibular nerve. Fine. Again it elevates mandible and helps in the protrusion of the mandible. Then you have the lateral pterygoid muscle. We will be talking about the relations of the lateral pterygoid muscle. This lateral pterygoid muscle, it is the key muscle of the infratemporal fossa. ये जो आपका lateral pterygoid muscle है ना, ये key muscle है infratemporal fossa का. ये वाला, ये lateral pterygoid muscle, ये key muscle है infratemporal fossa का. So what will be the relations here? इसको ऊपर से भी relations होंगी और deep भी. Superficially यहाँ पे इसको ऊपर क्या होगा, मैसेटर होगा. यहाँ पे एक वो मसल था ऐसे, quadrilateral मसल, मैसेटर. आई विल सी इन द प्रीवियस पिक्चर्स. ये मसल होगा लेटरल टेरिगॉइड को ऊपर से उठाया ना, ये मसल हो गया एक स्ट्रक्चर. फिर होगा रैमस ऑफ द मैंडिबल, ये मैंडिबल की हड्डी यहाँ पे रैमस उसका हो गया, ये भी उठाया. ये भी यहाँ से आएगा टेम्पोरालिस मसल है ना, उसका टेंडन जो एंड अप इधर होगा, उठाया, वो भी हो गए 3 स्ट्रक्चर्स which will be the superficial to your lateral pterygoid. We have removed the ramus. Fine. उसके ऊपर masseter muscle वो भी हटाया. Then you have the tendon of the, यहाँ से जो temporalis muscle है वो भी हमने उठाया. फिर नीचे से यहाँ पे एक और structure होगा maxillary artery. ठीक है, ऐसी जाती है वो maxillary artery. These are the superficial relations. अब जो उसके नीचे है लेटरल टेरिगॉइड के नीचे, लेटरल टेरिगॉइड हम यहाँ पे काट के हैं. दिस विल बी योर मैंडिबुलर नर्व. फाइन. ठीक है, सो यहाँ पे होगी दूसरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी. देन यू हैव दिस स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट. ठीक है, देन यू हैव द डीप हेड ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड.
ठीक है, क्या क्या वी विल कम अक्रॉस। सुपरफिशियली मैंने आपको बताया मैसेटर, वो एक मसल है, वो हटा दी। देन रामस ऑफ द मैंडिबल, वो भी यहाँ पे हटा के है। टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस, वो भी उठा के, एंड मैक्सिलरी आर्टरी। डीप अगर हम जाएंगे, मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे है, ठीक है, लेटरल टेरिगोइड के नीचे मैं बोल रही हूँ। मैंडिबुलर नर्व, यहाँ से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जाएगी, यहाँ से ये है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, और ये है डीप हेड ऑफ द मीडियल टेरिगोइड। स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट एंड डीप हेड ऑफ द मीडियल टेरिगोइड। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स सुपरफिशियल एंड डीप टू द योर लेटरल टेरिगोइड मसल। जो आपका लेटरल टेरिगोइड मसल है ना, उसके अपर बॉर्डर पे, उसके ऊपर वाले बॉर्डर पे, यहाँ पे अपर बॉर्डर पे होता है आपका डीप टेम्पोरल नर्व्स एंड मेसेट्रिक नर्व्स, ठीक है, और लोअर बॉर्डर पे होता है लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ योर lateral pterygoid muscles. I have told you have two heads of the lateral pterygoid, superficial and the deep. The structures passing in between the two, यहाँ पे होगी maxillary artery और buccal branch of the mandibular nerve। ये है ना ये space, इन दोनों के बीच में से निकलेगी maxillary artery and buccal branch of the mandibular nerve. Then comes the relations of the medial pterygoid, ये था lateral pterygoid. The relations of the medial pterygoid, I have told you it is a superficial muscle having the it is a quadrilateral muscle having the superficial head and the deep head. As you can see in the picture, the origin is quite evident here. Superficial head है ना, ये है जी maxilla bone, maxilla की tuberosity से जाता है superficial head. Deep head है ये है ना आपका lateral pterygoid plate, लेटरल टेरिगोइड प्लेट के मीडियल सरफेस से जाता है डीप हेड। फाइन, देन द रिलेशंस। सुपरफिशियली इसको क्या होता है, जो आपका मीडियल टेरिगोइड मसल होता है, ये है लेटरल व्यू, ठीक है, ये है लेटरल व्यू ऑफ द योर माउथ एंड द वेरियस स्ट्रक्चर्स अराउंड. सो दिस इज योर, I have to locate the things here. So this is, if we talk about the superficial structures which are above your medial pterygoid, यहाँ पे medial pterygoid muscle काट के ये है lateral pterygoid plate, इसको होगा superficially, फिर होगी यहाँ पे जी इसको lingual nerve ऊपर से, ठीक है, और lingual nerve की यहाँ पे होगी inferior alveolar nerve. क्या तीन स्ट्रक्चर्स होंगे जो सुपरफिशियल रिलेशंस में आएंगे? लेटरल टेरिगोइड प्लेट, लिंगुअल नर्व एंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. देन बीनीथ दीज स्ट्रक्चर्स यू विल बी हैविंग द मीडियल टेरिगोइड मसल. अब मीडियल टेरिगोइड मसल के नीचे क्या होगा? यू विल बी हैविंग 3-4 स्ट्रक्चर्स. अगर हम मीडियल टेरिगोइड, अब ये है ना, ये मीडियल टेरिगोइड यहाँ काटी है, इसके नीचे हम देखेंगे ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, superior constrictor of the pharynx. Then you have the tensor villi palatini, you have the tensor villi palatini muscle. Then you have the styloglossus muscle and the stylopharyngeus muscle, styloglossus and the stylopharyngeus muscle. अब फिर से I will repeat the relations of the medial pterygoid. इसको ऊपर से क्या क्या होगा? ये है lateral pterygoid plate, ठीक है, lingual nerve और inferior alveolar nerve. अब इन यहाँ पे हमने अब ये स्ट्रक्चर्स भी उठाए और ये मीडियल टेरिगोइड मसल काटी, तो इसके नीचे हमें मिलेगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स. देन यू हैव द टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल, यू हैव द स्टाइलोग्लॉसस एंड द स्टाइलोफेरिंजियस मसल. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. थैंक यू.